और मेरा नाम रविन है और आज हमारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ है, जिन्होंने जिनको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है, कबीर सिंह, खाकी, और टीवी में भी बहुत सारे सीरियल्स में आपने इनको देखा होगा। सो हमारे साथ है आज निकिता दत्ता। हाउ आर यू मैम? Thank you. Thank you for having me. I'm doing great. How are you? आई एम फाइन मैम। मैम But I think your इतनी network's bad. ओके, वन सेकंड। आई थिंक इज इट ओके नाउ? Yes, it's okay. सो हाँ, लेट्स स्टार्ट। ओके। सो मैम, अभी तक के आपने इतने सारी मूवीज की है, इतने सारे एक टीवी सीरियल भी आपने जो किया है, तो मुझे बताइए इन सब चीजों का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक आपका? एक्सपीरियंस, ये तो आपने बहुत लंबा सवाल पूछ लिया है। बिकॉज अभी टाइम हो गया है काफी, एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स बिकम लाइफ फॉर मी, एंड like whatever I am today, whatever I've become, is majorly because of whatever work I've done, and I'm very grateful to that because जितना मैंने काम किया है, चाहे वो टेलीविजन में हो या फिल्म्स में हो, it has just helped me learn. It has just helped me grow. It's just helped me try and get better at what I do. So overall, I think it's been a very fulfilling experience, which I'm very grateful for. मैम, तो आपको कौन सा स्पेस ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक टीवी और मूवीज, लाइक थिएटर्स? आई बी ऑनेस्ट, दोनों के ना अपने अपने एडवांटेजेस है। टेलीविजन की खास बात ये थी कि यू आर वर्किंग एवरी डे, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आप खाली बैठे हैं या फिर मतलब आपके पास कभी वक्त नहीं होता था, हमेशा काम कर रहे होते थे। एंड आई थिंक एज एक्टर्स वी ऑल लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो रोज आप कैमरा के सामने हैं। एक जो कनेक्ट आपकी ऑडियंस से बनता है, दैट्स ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज in everybody's household. So I feel like the love that I used to receive from the audience instantly was way more. और With टेलीविजन films, की एक चीज होती है ना कि आप एक पार्ट बन जाते हो, आप मतलब उनका पार्ट बन जाते हो, फैमिली yes, मेंबर बन जाते हो। yes, yes, yes. I know, especially मैंने एक शो किया था जिसका नाम था एक दूजे के वास्ते, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो बहुत ज्यादा देखा गया था शो। तो जब भी मैं लोगों से मिलती थी who used to watch that show or who were big fans of that, the kind of feedback I used to get to hear from them, the kind of love I have seen people who gave, like the kind of love that people gave that show, बहुत ओवरवेलमिंग लगता था। एंड दैट टाइम यूज्ड टू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ देयर यूनिवर्स, यू आर अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम, क्योंकि वो रोज आप ही को बैठकर देख रहे हैं आधे घंटे। So that was really good about television. On the other hand, I think films are something I personally enjoy doing because I feel जो एक creative space मिलता है, that I did not get in television because you're shooting every day. It's a daily telecast. You obviously cannot. It's logistically impossible. More than that, I feel मैंने जो अलग तरह के किरदार निभाए हैं वो फिल्म्स में आके निभाए हैं. I did not get that opportunity in television because I think all our Indian TV shows have this one way of thinking that the girl, the protagonist has to be nice and great. So I think that little experiment I have gotten to do once I got into films and with OTT. So personally, मैं films and OTT की space ज्यादा enjoy करती हूँ because मुझे खुल के काम करने का मौका मिलता है वहां पर. ओके, यू वर इन द बिग बुल। ओके, हाउ वाज Yes. वर्किंग विद अभिषेक बच्चन? बिग बुल को तो काफी समय हो गया, अभी लॉकडाउन में आई थी, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम. ही इज somebody who is वेरी वेरी विटी. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है. एंड आई थिंक because also like he's way senior, I think I learned a lot with being around him on set. At the same time, I think the one thing I learned from him was how to be, like how just to be lightheaded and cool and not to get stressed because he does it very correctly. So it was absolutely wonderful. I still consider him as one of my coolest co-stars. So that was with Big Bull. Uske baad, of course, I had the opportunity of working with Imran Hashmi, which was the book. And I think similarly, again, he's somebody who's just very focused in his work, which is I think the take back I took while I was working with him. So I feel कि जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात की थी शुरुआत में, जिस जिसके साथ भी मैंने काम किया है,
मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ मेरा समय बीता है, आई हैव ऑलवेज टेकन समथिंग बैक एंड आई हैव ऑलवेज लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. लाइक आई थिंक दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी टू वर्क विद सम वेरी वंडरफुल पीपल. बट लेकिन पता है आप न्यूज पढ़ते हो थोड़ा बहुत? ऑफ कोर्स. यस। तो अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग एक चीज चल रही है कि जो अपना निकिता दत्ता है, उनने कहा है अबाउट जो तृप्ति डिम्पी का रोल है इन कबीर, इन अपना एनिमल, वो सिमिलर टू योर रोल इन कबीर सिंह। दैट्स रोल वाज सिमिलर टू माय रोल इन कबीर सिंह. मैंने ऐसे कभी नहीं कहा है. क्योंकि इनफैक्ट सिमिलैरिटी, हाँ। no, I have not said there were similarities. In fact, I think the internet has been saying a lot of this, which I mean, I मतलब लोग तो comparisons करेंगे, but then at the same time, the one thing I did say was that I really liked Tripti's role in Animal. I think she was like a breath of fresh air when she came on screen. So I thoroughly enjoyed watching her play that part. But no, I don't think there was any similarity. That's for the audience, not for me to ओके। say. सो ये इंटरव्यू के साथ एक फैक्ट चेक भी बहुत क्लियर हो चुका है, क्योंकि इट्स ट्रेंडिंग ऑल ओवर न्यूज, लाइक इफ यू विल गो टू जी. गूगल एंड विल सर्च फॉर इट, you will see all those comments, because when I was searching about you, to know more about you, so that time I got to know about all this news titles which are trending on Google. So basically अभी आपके थोड़ा बैक Hmm. जाते हैं लाइफ में। so मुझे एक बात बताइए कि जब आप पहली बार लाइक मूवीज में आने का प्लान था, लाइक यू वांट टू बी एक्टर, सो ये चीज कैसे एक्सप्लोर की कि आई वांट टू बी एक्टर एंड आई वांट टू बी इन मूवीज? एक्चुअली मैंने बचपन से तो बिल्कुल नहीं सोचा था दैट आई वांट टू बी एन एक्टर. इट वाज नॉट समथिंग कि मैं मतलब जब 5 साल की थी, 10 साल की थी, तब से बोल रही हूँ कि हाँ मैं बड़े होकर एक्टर बनूंगी. ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे दूर दूर का दूर दूर तक किसी का इस इंडस्ट्री, इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. सो फॉर मी टू जस्ट गेट अप एंड से कि मैं एक्टर बनूंगी, आई थिंक अगर मैंने तब ऐसी बात की होती तो मुझे शायद तो थप्पड़ देख के बोला होता कि जाके पढ़ाई करो. So I was definitely not one of those who said this from childhood. एक चीज जरूर हुई. I had taken part in Miss India and it was a very fluke incident for me. I did not take part in it thinking कि मतलब future मेरा यहीं पर है. But I did realize one thing during that entire time when I did take part. I felt and I think I got a lot of clarity on some things कि मुझे कैमरा के सामने अच्छा लगा. मुझे being and like the small little things that we had to do in terms of acting pieces during the endorsement times and walking on the ramp, I enjoyed that. I think from there my inclination went towards this side, and somewhere by then I knew that this is what I want to do. I got even more sure जब मैंने television किया 2015 में, and I actually started acting like 24/7 perpetually. तब मुझे ये realize हुआ था कि this is a job that gives me the maximum happiness, the maximum, the satisfaction that you get out of doing some job, right? So this is it for me. So even today अगर मुझे कोई पूछता है that what do you enjoy the most, I think I love being on a shoot set acting. अगर मेरी जिंदगी के हर दिन I'm doing that, I'm going to be very happy. सो यही बात है, तो मुझे एक बात है ना कि आपके इसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? So at the moment, I think this year आप सभी को मुझे बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा. Hopefully, I have all things that I've been shooting for coming out this year. The ones I can talk about, there is a film called Dange which should hopefully release soon. जिसमें हर्षवर्धन राणे है और ईहान भट्ट है. There is a Marathi film that I'm doing, which is called Gharat Ganpati. वो आपको इस साल ही दिखाई देगी. And apart from that, there are three more things which I will speak about whenever I can. ओके। सो अभी मुझे जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उस जितने प्रोजेक्ट्स अभी आपने किए, अभी तक ही किए, तो उसमें से आपके लिए सबसे स्पेशल कौन सा है? It's very difficult to say that, to be very honest, क्योंकि हम जो है अपना effort डालते हैं उसमें. We put our blood, sweat and effort in whatever we are doing. चाहे वो एक ad shoot क्यों ना हो, चाहे वो एक film क्यों ना हो.
So it's very difficult to pick. It's like asking a mother to pick between like her favorite child. बहुत मुश्किल सवाल होता है कि आपका कौन सा फेवरेट प्रोजेक्ट है. एंड हम एटलीस्ट मैं कोई भी प्रोजेक्ट ये सोच के नहीं करती कि ये हिट जाएगा ये हिट नहीं जाएगा. नहीं, हम लोग हर चीज में अपनी पूरी जान लगाते हैं. So that's a very, very difficult thing to answer because I won't be able to pick. I think everything that I've done, even if it's done well or not done well, it's equally dear to me. तो ऐसा एक डायरेक्टर जिनके साथ आपको काम करना. Yes, actually the list is very long. I think Sanjay Leela Bansali tops the list. And somebody who I've admired since my growing up years because मैंने उनकी फिल्में बहुत मतलब बहुत प्यार से देखी हैं is Rajkumar Hirani. I really like his filmmaking and his world of cinema. So when I think about, I think these two directors are on the top of my list. ओके. और ऐसा एक को स्टार जिसके साथ आपको वर्क करना है. My answer has been the same for like almost last 7-8 years. It is Shah Rukh Khan. I think the moment I started acting, it's been on my list since forever that I want to work with him. But yeah, that won't change. That won't change till it actually happens. शाहरुख सर है ना, हमेशा हर किसी की लिस्ट में टॉप ही कर रहे होते हैं. अगर कोई मुझसे पूछे किसका But इंटरव्यू he करना has that शाहरुख effect. खान. अगर आप कभी उनसे मिले आप ये बात समझेंगे. He has that effect where he charms you and leaves you. चाहे वो आपके साथ 5 मिनट बिताए या आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा बिताए या दिन बिताए. He will leave you charmed, and that's what's happened with me. I think I was not like this until I met him, and then I had done this small little thing with him for Screen Awards. I remember back in 2015, and उस दिन से लेके आज तक मेरे दिमाग में यही रहा है कि I really want to work with him once. दिस हैपेंस विद एवरीवन. इफ लाइक किसी से भी बात करो एंड शाहरुख सर का नाम आता है, तो मुझे एक ही चीज हमेशा बोलता है कि जाओ एक बार मिलो उनसे, आपको तब जाके Yes. पता चल जाएगा. लाइक इवन अ Yes, वन yes. मिनट And इज एवरीथिंग. I'll tell you, I literally, before meeting him, I had a very indifferent and neutral attitude because I was like, okay, मैं इतनी जल्दी intimidated नहीं होती किसी से भी. चाहे कोई भी हो, I have met people in the past and all, I don't get intimidated that easily. So I think the same attitude I had before meeting him, but it's only post whatever, like those 2 days of one day of rehearsal and one day of the main award show that I spent, is when I realized I was like, hands down, I'm a fan for life. ओके. सो मैम एक और एक बात बताइए. लाइक इतने सारे नए नए यंग एक्टर्स आ रहे हैं, बट दे उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट क्या करना क्या है, कि आगे बढ़ना है तो करना क्या है. मैम आपका इतना एक्सपीरियंस, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ एक स्मॉल सी चीज जो आप उन लोग को बता सकते हो कि क्या करना लाइफ में, लाइक फॉर एक्टिंग पर्पस. एक्टिंग पर्पस देखिए मैं आपको एक्टिंग टिप्स तो नहीं दे सकती बिकॉज दैट्स अ स्किल दैट इंडिविजुअली यू हैव टू वर्क ऑन. I can't even say कि ऐसा ही करो या ऐसा मत करो because I very firmly believe कि हर एक एक्टर की अपनी जर्नी होती है. अगर आप हिस्ट्री में देखें, somebody becomes successful at the age of 50, 40, somebody at the age of 10, 15. मतलब there is no by the book rule कि यहाँ पे ऐसा ही चलता है. सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी है, सबके अपने अपने अलग तरीके हैं to kind of make it. The only one thing that I always say is that this is a place that needs a lot of patience. It needs you to be as strong as a rock because there's a lot of uncertainty involved. There is a lot of insecurity that comes in sometimes. You question yourself. And also ये कोई regular desk job की तरह नहीं है जहाँ पे आप सुबह काम पे जा रहे हैं शाम को वापस आ रहे हैं. This also involves a lot of your emotional health, not just your physical and mental, but this has the added factor of emotional health. So the two things you need to keep in mind is patience and just try and be as strong, like have a strong support system if you want to last longer here. थैंक यू मैम, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और थैंक्स फॉर Thank you. गिविंग टाइम टू नाइन एक्सेल. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you.